A very good morning, friends. I hope you're all safe and healthy. Well, I have been discussing a couple of issues related to important paras in Indus 1 this month. And typically in the previous video, I started making a discussion with reference to Schedule 3 as well. As I said, the discussion of Indus 1 is incomplete without touching upon certain areas of Schedule 3, Division 2 in particular. Now, in this particular video, what I am going to discuss with you is certain aspects of, you can say, statement of changes in equity. Now, when we look at the statement of changes in equity, that is what we call SOCE. Some people prefer to call it as SOCE. Irrespective, it is SOCE. Now, in this particular case, this is a new document, you can say, which was not there under the accounting standards. Now it is there in Ind AS. Now, in order to understand the broad concept of the SOCE or the SOCE, whatever, so we're going to have a little insight in terms of what are the various components of the heads under which the statement of changes in equity is divided. Let's find this out in this video. A little more insight on the SOCE or SOCE, whatever you call it. अनअकैडमी पर जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट की अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आइकॉनिक बैचेस चल रहे हैं। सर, ये आइकॉनिक बैचेस और प्लस बैचेस के बीच में डिफरेंस क्या है? भाई, जो आपको चीज़ें प्लस बैचेस के अंदर मिलती हैं उनसे एडिशनल फीचर्स आपको आइकॉनिक बैचेस में मिलते हैं। जैसे कि प्लस फीचर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलती हैं और उसके साथ साथ आप उसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस पर भी एक अनलिमिटेड एक्सेस रखते हैं। लेकिन आइकॉनिक बैचेस के अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि देयर इज अ लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। अब इसमें आपको कई सारी एडिशनल चीजें मिलेंगी। नंबर 1, आपको हर सब्जेक्ट की एक प्रिंटेड बुक मिलेगी। भाई, जब आप पढ़ते हैं तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं एक बुक की हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है, तो प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी फॉर एवरी सब्जेक्ट। इसके अलावा आपकी 1-to-1 एक पर्सनल कोचिंग आपको अवेलेबल है और साथ में इसके अंदर आपकी 1-to-1 डाउट सॉल्विंग भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज एक बड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर की जाती हैं, जिसके अंदर आपने 40% कोर्स कंप्लीट किया, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, फिर आपने 40% टेस्ट कवरेज और की, फिर एक और टेस्ट किया गया, और फिर जब आपका रिमेनिंग 20% कोर्स कंप्लीट हो गया और इसके अंदर आपकी पूरे कोर्स की तैयारी हो गई, तो फिर आपका एक टेस्ट और कंडक्ट होता है और उसकी पूरी की पूरी आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी। इसके साथ आपके साथ बीच बीच में कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। वो अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करेंगे, जिनसे आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक कनेक्ट मिलेगा। और ये नहीं, साथ में आप अलग से एक प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी के साथ भी जुड़ पाएंगे। ये सभी फीचर्स आपको आइकॉनिक बैचेस के अंदर मिलते हैं और इसके अंदर, जैसे मैंने कहा, एक 1-to-1 यानी 1-to-1 बेसिस पर आपकी एक लाइव मेंटरिंग होती है इन आइकॉनिक बैचेस, जिन पर आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं एंड इट इज ऑल जस्ट अ क्लिक अवे। एक कस्टमाइज स्टडी प्लान आपके लिए बनाया जाता है फ्रॉम ऑल दी डेडिकेटेड मेंबर्स। तो ये सभी एडवांटेज आपको मिलती है जो आइकॉनिक बैचेस के अंदर मिलती है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और एक बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी टेस्ट कंडक्ट होती है एट 40% कंप्लीशन, देन एट 80% कंप्लीशन एंड देन एट 100% कंप्लीशन। और साथ ही साथ इसकी आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाती है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किधर आप इंप्रूव कर सकते हैं। तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर, जिसे हम कहते हैं ना, एक ऐसा नहीं होना चाहिए पोस्ट फैक्टो कंट्रोल हो, एक प्री फैक्टो कंट्रोल होना चाहिए लाइफ में, कि जैसे जैसे आपकी चीजें चल रही हैं उस पर एक असेसमेंट कॉन्टिन्यूस चले। भाई, अब एक मेन बात पर आते हैं कि अल्टीमेटली हर चीज इस बात पर सेटल करती है कि भाई इसकी सब्सक्रिप्शन सर कॉस्ट कितनी करेगी। अगर आप इस वक्त इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप्स की प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर लेट्स से यू टेक अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन
तो आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट बैठती है और पर मंथ बेसिस वो आती है 3188 और इस पर आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CAKB10 और जिसके बेसिस पर आपको इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ले दे के आप लगा लीजिए इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 2800 के आसपास बैठती है। अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का दोनों का आप प्लान कर रहे हैं तो नेचुरली 1 साल फाउंडेशन और 1 साल इंटरमीडिएट की तो 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं और जिसके अंदर आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है दैट इज 2750 मंथ। ये कॉस्ट आपकी है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि इंटरमीडिएट के सारे आपके पेपर्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंबाइंड, इंटरमीडिएट ऑल कंबाइंड, और इस पर आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो भाई किस बात का इंतजार है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लेट्स क्रैक इट। Statement of changes in equity has got two parts. As you might be aware that if you look at the balance sheet of a company as per Ind AS, there is equity reflected in the balance sheet, which is comprising of two things. One is equity share capital and the other is what we call other equity. Now, other equity, typically reminds you of the reserve and surplus, which used to appear in the accounting standard. There is division 1 of schedule 3. Now, in this case, I would say other equity is supposed to be, a much wider concept as compared to the word reserve and surplus, because reserve and surplus is just one particular component of other equity. Now, what I've done, I have actually, cut down this other equity into 3 different tabs. I prefer to call them as tabs, though officially, if you look at the format of the statement of change in equity, it doesn't talk of any kind of tabs. But I would prefer that if I were to look at the SOCE or the SOCE, I would consider that in this particular case, there are 3 tabs. Now here you can see the tab number 1. Now, typically in the tab number 1, my focus is more on the equity instruments of CFI, that is called the compound financial instruments. So this is you can say the area when a company would issue a compound financial instruments, when a company would classify the instrument as a CFI as per Ind AS 32, then you do a split accounting and we segregate the liability and the equity component of the instrument. And the equity component of the instrument is put in this tab number 1. So we can say it is basically arising out of split accounting, out of the proceeds of a certain instrument, which has got equity as well as a liability component. So the equity element, the equity component of the instrument gets represented in tab 1. Similarly, what I've done, I've taken the tab 2, and which is absolutely synonymous with what you say the reserve and surplus in division 1. Now, if you even see the inner headings in terms of the tab number 2, which is reserve and surplus, it gives you examples of capital reserve, security premium, other reserves, as well as retained earnings. Now, retained earnings is nothing but it is going to reflect, you can say, the profit and loss component of the total comprehensive income. Now, if you remember in the previous video, I was talking of the profit and loss and I said it comprises of the total comprehensive income, the point number 15, which is a sum total of 13 plus 14. This retained earnings is going to reflect whatever is coming from the point number 13. So this is like the tab number 2. You can say items which are coming from the point number 13 of the profit and loss, or maybe certain items like capital reserve, security premium, etc. Then there is a tab number 3, which is a huge tab in terms of the statement of changes in equity. And this is the tab which you can say that items which enter the OCI, it could be 14A or it could be 14B, what is taken in the income statement. Remember in the previous video, we were talking in terms of the items which are taken in other comprehensive income. 14A would consider items that is not reclassified, and 14B is comprising of items which is reclassified.
So all the items which are taken in 14A and B, you'll find them in the tab number 3. Interesting, isn't that so? Which means that tab 1 takes care of typically the equity component of instruments, which has got a liability as well as equity components. The tab 2 is basically the reserve and surplus, and it comprises of the items which are taken in point number 13 of the profit and loss. And the tab number 3 is comprising of all the items which are taken in the 14A, 14B points in the other comprehensive income. And then if you add up the tab 1 plus tab 2 plus tab 3, then you get the total column. Now this is looking at the upper side of the SOCE. That is SOCE. Now, there is another side of the statement of change in equity, which is the side which talks about the particulars. Now, I will give a little insight on that also in the next video. That would be a concluding video on the Index 1, where I'm going to talk a little more on the SOCE in the part number 2. That's all in this particular video. Thank you for watching. Bye-bye and take care.